Pt Cn 2 negative ion. So they are asking about the unpaired electrons. Okay. So what you need to do here, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछा है तो उसी के बारे में हम लोग ध्यान देंगे. दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता करना पड़ेगा दैट डी में कितने अनपेड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द डी ऑर्बिटल, डी सबशेल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है. एंड बिकॉज यहाँ पे आपके पास सी एन है, देन ऑब्वियसली पेयरिंग हो जाएगी बिकॉज सी एन इज व्हाट, इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. मेक सेंस इज नो पीसल में गई बात समझ में आ रही है. ठीक है. बस यस अब सर। देखना, अगर डी में आपके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए ना, डी में अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए, दैट मींस देयर विल बी जीरो अनपेयर्ड, है ना. और अगर ऑड हुआ तो उसमें एक बच जाएगा. फिर ठीक है, कैसे वो समझ लीजिए आप. मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 पेयरिंग कीजिएगा तो कैसे पेयरिंग होगी, 1 2 और एक बच गया, राइट. सो इफ यू आर हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डी सबशेल, तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, बिकॉज पेयरिंग तो होनी है, बिकॉज सी एन इज वॉट, सी एन इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दैट मीन्स पेयरिंग विल टेक प्लेस. But if you have even number, na, for example, you have 4 electrons. So 1, 2, 3, 4. After pairing, it will be 1, 2, 3, 4. So if you have even number, then there will be zero unpaired electron. If you have odd, then there will be one. Now we have to see that how many electrons are in the d subshell. For this, you should know what is the atomic number of platinum. Obviously, वो तो आपको पता नहीं है. And I'm not saying that you have to remember it. But what you should remember is that platinum, it is coming in which group? So you should remember this: nickel, palladium, and platinum. These three, they are in one group. Now, nickel, it has atomic number 28. And because it has 28, what is the electronic configuration? It is 4s2 td8. So palladium के कितना हो जाएगा? Palladium will be 5s2 4d8, you can imagine. And platinum will be how much? 6s2 and 5d8. Make sense? Yes or no, please tell me, guys. Does this make sense? Yes or no? बोलो भाई, यस सर। है ना. Now, before going to the electronic configuration, we have to look at the oxidation state of platinum, right? So oxidation state of platinum will be X minus 1 into 4, it is equal to minus 2. So X minus 4, it is equal to minus 2. X is equal to 4 minus 2, it is equal to plus 2, right? So platinum plus 2 will have 6s0 and 5d8. So we have d8 configuration. So you write Pt plus 2 has d8 configuration, and Cn is strong field ligand. Therefore, pairing will take place. And you will have something like this: 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So you can see zero unpaired electrons. And in addition, if they ask about the hybridization and the geometry for this, then please remember, when strong field ligand is present, and here we are taking case of metal and there are 4 ligands. So in this case, you will have square planar geometry. And if we talk about the hybridization, then the hybridization will be DSP2. Hybridization will be DSP2. Write this down. Raise your hand once you're done.
Please raise your hand once you're done writing. Okay. Waiting for Deborah, Fia, Mir, and Fadil. Waiting for Deborah and Fia. Alisa, you can take a screenshot. Okay, sir. Alisa, took a screenshot. Yes, sir. Write another question, guys. Nickel Cl4, 2 negative, is paramagnetic while nickel CO4 is diamagnetic though both are tetrahedral. So for this type of question आपको यहाँ पे पहले फोकस करना पड़ेगा वो किस बारे में पूछ रहे हैं, है ना। तो दे आर नॉट आस्किंग कि ये टेट्राहेड्रल क्यों है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो सारा कुछ स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह वगैरह हाइब्रिडाइजेशन निकाल के फिर बताते हैं sp3 है दोनों, एंड बिकॉज दे आर sp3 दे आर टेट्राहेड्रल। तो दैट इज नॉट द केस, यू डोंट हैव टू डू दैट। दे आर नॉट आस्किंग कि ये टेट्राहेड्रल क्यों, दे आर आस्किंग कि NiCl4 तो पैरामैग्नेटिक है पर NiCO4 डायमैग्नेटिक है। यहां आपको कंपैरिजन करना है कि पैरामैग्नेटिक क्यों है और डायमैग्नेटिक क्यों। सो वी विल फोकस ऑन दैट, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, इनिशियल आपको तो डी, whenever you have to talk about paramagnetic and diamagnetic, please remember you have to talk about the d electrons. Now in order to get the d electrons you have to do the electronic configuration. For electronic configuration you need to know what is the oxidation state. So when I take NiCl4, when I take NiCl4 2 negative, what is the oxidation state here, tell me guys? 10 second time लगना चाहिए oxidation state के, ना, not more than 10 seconds. 10, in the chat you will tell me what is the oxidation state. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. You guys need to practice. अगर 10 सेकंड में आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बता पा रहे हैं then you need to practice, ठीक है। No, Rajita, not right. See here guys, nickel will be X plus 4 into chlorine is minus 1 will be equal to minus 2. So X minus 4 is equal to minus 2. So X will be equal to 4 minus 2, that is equal to 6. Oh, mine's gone bad. 6 हम रजिता का देख के बोल रहे हैं plus 2. My bad guys, 4 minus 2 will be plus 2. So nickel is plus 2. Now what will be the electronic configuration for nickel 2 positive? Nickel 2 positive के लिए क्या होगा बताइए? शक्ति विक्रमण फेकोनी, नी, that means we have argon 4s0 3d8. correct guys, इसमें भी सलमी? अरे बोलो भाई। देन अरे हाँ है ना, 3d8 ना। ये तो आप लोगों को हमने अलग से लिखाया भी है, +2 में कितना होता है, +3 में कितना होता है।
रिवाइज कीजिएगा तब आएगी चीजें, इफ यू आर नॉट आएंगी चीजें। व्हेन वी वर डूइंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तब तो सारा लिखाया था हमने। सी हियर। ठीक है, तो निकल +2 में क्या होता है, D8 होता है। ठीक है, चलिए नाउ देन यू राइट सिंस Cl इज वीक फील्ड लिगेंड। Cl कैसे वीक फील्ड लिगेंड है, देखिए आपके पास D8 एंड देन यू आर इन द 3D सीरीज, ऑक्सीडेशन +2, तो फिर लिगेंड देखेंगे, लिगेंड बिफोर H2 दैट मींस इट विल बी व्हाट, टेट्राहेड्रल और sp3, और वहां पे पेयरिंग नहीं होगी, इट विल बी वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है ना। सो अगर आप देखिए Cl, आई थिंक इट इज द लास्ट क्लास ना। सो Cl is what, before water only ना। ठीक है, so that is why since Cl is weak field ligand, pairing will not take place. One, two, three, four, five. So you'll have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Here's right, as there are two unpaired electrons, nickel Cl4 2 negative is paramagnetic. What about NiCO4? So here X plus 4 carbonyl is 0. It is neutral, will be equal to, there is no charge on this complex, na, so 0 ho jayega. So it will be, X will be 0. So nickel is 0. So in this case, the electronic configuration of nickel is what? Argon 4s2 3d8. As you can see here also, we are having 4s2 3d8. You will write as CO is strong field ligand, pairing will take place, and there will be 0 unpaired electrons. ठीक है, अब ध्यान रखिए आप लोग, अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो आपने सीधा यहां पे देख लिया Cl इज व्हाट, इट इज वीक फील्ड लिगेंड, और कार्बोनिल, इन दोनों को कंपेयर करके तो आप बता सकते हैं ना, सीनॉक्स लगा के, carbon donor, then nitrogen donor, and then halogen, oxygen donor, then halogen donor. So obviously carbon donor will be what, strong field ligand, and halogen donor, chlorine, weak field ligand. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ आप ये लाइन लिखिएगा, since Cl is weak field ligand, pairing will not take place, as, and then you write pairing will not take place, therefore the complex is paramagnetic, so on. ठीक है, and then for CO, as CO is strong field ligand, pairing will take place and there will be 0 unpaired electrons, therefore it is डायामैग्नेटिक। ठीक है, सो आंसर राइटिंग में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन ओनली 1 मार्क्स, जनरली 1 और 2 मार्क्स का सवाल आता है, तो इतना ज्यादा लिखने की आपको वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 मार्क्स का आएगा तो फिर आपको लिखना पड़ जाएगा पूरा का पूरा, यू कैन नॉट टेक एनी चांसेस। बट इफ इट इज 1 मार्क्स, देन यू विल जस्ट टेल अबाउट द नेचर ऑफ लिगेंड, वेदर इट इज वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड। Since it is weak field, pairing will not take place, that is why it is paramagnetic. And in strong field ligand, you will say that pairing will take place because it is strong field ligand. There will be 0 unpaired electrons, and therefore it is diamagnetic. ठीक है, so here this इस तरह से आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे। Write this down. Raise your hand once you are done.
Raise your hand once you're done. Waiting for Deborah, Fia, and Mir. Just waiting for Fia now. You guys see here. Write the hybridization of cobalt F6 3 negative. आपके पास एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर इट इज इक्वल टू 27. चलिए इसको प्लीज सॉल्व कीजिए. आई होप यू गाइस कैन डू दिस. आपको सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन बताना. यू डोंट हैव टू शो द कंप्लीट बॉन्डिंग. ठीक है. आपने अगर बोर्ड्स के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन लिख दिया ना आपको मार्क्स मिल जाएंगे. यू हैव टू टेल मी द व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन. बट राइट नाउ यू विल शो टू मी कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन आया.
Let's take 2 more minutes. स्टोन्स इज ओवर। यार क्या हुआ, आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं क्या घर में? हाँ गाइस, चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला होगा किसी ने। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट? टर्न योर माइक ऑन एंड टेल मी गाइस। 3. ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ वेरी गुड, +3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट +3 का कितना होगा? आर्गन, नो आइडिया। आर्गन 4s0 3D। कोबाल्ट कितना 27 ना, -1 कर दीजिए बस। अगर आपके पास, सुनिए, अगर आपके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है तो आपको क्या लिखना है? D7। जितना यहाँ पे है वही लिख देना है। +3 आता है तो क्या कीजिएगा, एक और माइनस कर दीजिए, D6 हो जाएगा। ठीक है, 3D6। नाउ फ्लोरीन इज वीक फील्ड लिगेंड, देयरफॉर नो पेयरिंग। अब जब पेयरिंग नहीं होती है ना, एंड यू हैव D6, 5 6, पेयरिंग नहीं हुई है तो यू हैव टू टेक द 4s 4p एंड 4d। दीज ऑर्बिटल विल हाइब्रिडाइज और यहाँ पे बनेगा आपके पास sp3d2। ठीक है, सो दैट इज व्हाट, दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2, दैट्स इट। तो आपको बस यही देखना है। ठीक है, चलिए राइट दिस डाउन। देन गाइस इसमें भी चलनी।
लिख लिया आप लोगों ने? अलीसा, डेबोरा, फिया एंड रजिता? यस सर। यस सर। राइट, नेक्स्ट टॉपिक, color in coordination compounds. Color in coordination compounds. ठीक है. So before talking about color in specifically coordination compounds, let us try to understand why do we usually see color. ठीक है. उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज माइक ऑन करके एक जवाब दीजिएगा. इफ आई टर्न द लाइट ऑफ, कैन यू सी एनी कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट? क्या किसी ऑब्जेक्ट का, फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग विद ब्लू पेन और ब्लैक पेन, इफ यू टर्न ऑफ द लाइट, कैन यू सी दैट ब्लू और ब्लैक थिंग जो आपने लिखा है, इज इट विजिबल? नो सर। नो. दैट मीन्स देयर इज वन प्रीरेक्विजिट फॉर कलर, दैट इज लाइट. और ये दूसरी चीज आपको ये भी पता होगी, कई बार आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है दैट आपने दुकान से लिया कोई कपड़ा, दुकान में वो कुछ अलग कलर का था. when you were buying that dress or something, whatever it is, in the shop it was of some other color, but when you come home it is of some different color. ऐसा कभी हुआ है? और you have bought everything online? Ever happened with you guys that you bought something in the store or the shop, it looked a bit different, the color was a bit different, but when you came home that color is different? कभी नहीं? किसी के साथ नहीं हुआ? अलीजा, डेबोरा, फिया, रजिता? यस सर, काइंड ऑफ। काइंड ऑफ, है ना? अलीजा के साथ इंडिया में रहती हुआ होगा ऐसा, है ना? ठीक है. वहाँ एक बड़ा फेमस मार्केट है, क्या नाम है? अमीर निशा ना? अमीन निशा. यस सर। अमीन निशा. वहाँ होता है ऐसा? ये सर अलीजा? सर एग्जैक्टली नहीं, बट थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत होता है ना? अच्छा, इसका मतलब लाइट की वजह से कलर में कुछ तो इफेक्ट आता है. ठीक है, तो दो चीजों से हमको ये पता चला दैट लाइट इज समथिंग विच इज नेसेसरी फॉर कलर, है ना? अच्छा, व्हेन लाइट हिट्स एन ऑब्जेक्ट ना, तो तीन तरह की चीजें हो सकती हैं. ऑब्जेक्ट पे क्या हुआ? लाइट हिट्स ऑब्जेक्ट, तो तीन चीजें हो सकती हैं. यू डोंट हैव टू राइट दिस डाउन. ठीक है, ध्यान से देखिए. हम तीन चीजों के लिए अलग अलग से करते हैं. सो व्हेन लाइट हिट्स ना, लाइट, जब व्हाइट लाइट अगर हम बात करें, टॉकिंग अबाउट व्हाइट लाइट, इन व्हाइट लाइट आई विल हैव जी और. करेक्ट है गाइस? सुनो प्लीज, है ना? यस सर। ठीक है. नाउ देयर आर थ्री थिंग्स. आइदर इट एब्जॉर्ब्स ऑल, इट एब्जॉर्ब्स ऑल द कंप्लीट वेवलेंथ, वायलेट भी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया. If it is absorbing everything, it will not reflect anything back. No reflection. It is not going to reflect anything back. And then this will appear black. है ना? कोई आपको कलर दिखेगा ही नहीं. कलर नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या है? इट इज व्हाट? इट इज ब्लैक. सो ब्लैक कलर अपीयर्स इस वजह से, बिकॉज ऑल द लाइट इज एब्जॉर्ब्ड इन दैट. दूसरा केस क्या हो सकता है? इन विबजियोर एब्जॉर्ब्स ऑल था एक केस, और दूसरा क्या हो सकता है? एब्जॉर्ब्स नथिंग. इसने कुछ एब्जॉर्ब नहीं किया. देन व्हाट वुड हैपन? This white light, it hits the object and the white light is reflected. क्या रिफ्लेक्ट हुआ? white light is reflected. अब जब white light reflect होगा तो आपको ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा? This will appear white. The third case is when VIBGYOR it hits, that means white light hits. Let us suppose it is absorb some. मान लेते हैं यहाँ पे ऑरेंज इसने एब्जॉर्ब किया, ऑरेंज. Then it will reflect back what? It will reflect VIB, G and R.
अब violet, indigo, blue, green, yellow, red, the combination of this color, that will be the, ये जो कॉम्बिनेशन होगा ना इन सारे लाइट्स का, इस लाइट का कॉम्बिनेशन से कुछ कलर आएगा, एंड दैट कलर वुड बी द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, वही आपको अपेयर होगा. नाउ आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट गेट्स इट्स कलर. मेक सेंस? ऐसा प्लीज टेल मी गाइस. तीन केसेस हैं. अगर सब कुछ उसने एब्जॉर्ब कर लिया, देन इट विल अपीयर ब्लैक. If it is absorbing nothing, it will reflect everything back. So white light hits and white light is reflected. Then what will happen? It will appear to be what? It will appear to be white. If some of the wavelength or some of the light is absorbed, some of the color of light, that means violet, indigo, blue, green, yellow, orange, all of these will have different wavelengths, different frequencies, different energies, right? Respective energies. So if it is absorbing some, for example, green वाला उसने absorb कर लिया, तो बाकी बचे हुए रिफ्लेक्ट होंगे, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोस कलर विल बी द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट. मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस. अलीजा, Yes, डेबोरा, sir. फिया. Yes, sir. ठीक है. अब ध्यान से सुनिए जरा, ध्यान से सुनिएगा. हमारे पास होता क्या है when we are talking about coordination compounds ना. See, each and every violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red, all of these will have certain frequencies. Certain frequencies will have certain wavelength, and these will have certain energies. All the light, they correspond to some frequency, wavelength, and energy, है ना? Now when you have the octahedral complex, let us suppose, and the splitting is like this, and you have some electron in the EG level. D1 की हम बात करें, for example, you have one unpaired electron in the EG level. My bad guys, EG नहीं होता ना, this is T2G level, and this is del O, right? Now if this del O corresponds to any color, for example, ये जो del O है ना, this difference in energy, it is equal to the green light की जो energy है उसके बराबर है. So what will happen when the VIBGYOR, when light hits, तो क्या होगा? It will absorb green color. इसका green color नहीं आएगा, it will absorb green color, and the other color which is reflected, that will be appearing as the color of object. So when the light absorb, it will go up, absorb किया, बाकी रिफ्लेक्ट करेगा, यही absorb हुआ. इसी की वजह से क्या होता है? Because of this absorption, there is a transition of d electron from T2G to EG level. इसी को बोलते हैं DD transition, and due to the DD transition only we get the color of coordination compound. यहाँ पे absorb किस वजह से होता है? Because of this splitting of d orbital. So you can see how crystal field theory also explains the color in objects. Color कैसे explain हो रहा है? If we did not have this splitting, since in the case of valence bond theory we did not have any splitting, so valence bond theory की एक limitation हो गई, that valence bond theory does not explain the color of the complex. CFT का एक advantage हो गया, that it is going to explain how the color is getting formed. So color कैसे होता है? Because of the splitting of the d orbitals. When it is split, unpaired electron, it absorbs certain frequencies and the rest of it is reflected back. ठीक है, चलिए अब एक एक चीज हम आपको लिखा रहे हैं, ध्यान से लिखिएगा. The color we see in a complex, please write. The color we see in a complex Sir, no is need to due write the before one. नहीं, आपको नीड तो नहीं है. अगर आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना चाहते हैं ये चीज, ये जो सर्कल्स और ये चीज बनाए हैं, तो लिख सकते हैं आप. अपने पेज छोड़ दीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिएगा. आई होप आपको याद रहे, है ना. The color we see in a complex is due to the light absorbed by the complex and the reflected light is seen by us as the color. The d orbital electron, the d orbital electron absorbs energy and transitions to
higher energy level from T2G to EG, है ना, T2G से EG. This is called DD transition. The frequency of light absorbed by complex depends on the del O. Del O of complex, है, del O of complex. यानी CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पे डिपेंड करता है ना. अगर डेल ओ ज्यादा है, ठीक है, ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो एनर्जी ज्यादा होगी. एनर्जी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी. फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगा. डेलो किसका ज्यादा होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का. कंपैरेटिवली स्पीकिंग स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड विल हैव हायर डेलो. और उसी तरह से अगर हम उल्टे जाएं, जब डेलो कम होगा तो एनर्जी भी कम होगी, the frequency will also be lower and the wavelength will be higher. And this is for weak field ligand. ठीक है, please write this down. Raise your hand once you're done. So for coordination compounds, is there any topic that is frequently asked or particularly or specifically important? I did not hear completely, but you're asking about important topic. Yes, sir. I was asking you that for coordination compounds, is there any topic that is particularly or specifically important? Particularly or specially Specifically important. important. IUPAC naming for board examination. IUPAC naming से मतलब हमेशा सवाल रहते ही रहते हैं. बट ऐसा मत समझिएगा IUPAC नेमिंग छोटा टॉपिक है. In IUPAC naming, you have to know that oxidation state कैसे निकाला जाता है. You have to remember all the name of ligands, right? Then you have to remember the rules also. Okay. You have exam, right, रजिता? फर्स्ट Yes, को है sir. शायद, उसमें कोऑर्डिनेशन आ रहा है. Yes, sir. Lisa, Deborah, and Fia, raise your hand once you're done. आप कैसे तैयारी करते हैं रजिता और एग्जामिनेशन चल रहा है? Tayari has what do you like? How do you prepare for the exam? I study. अरे भाई, obviously you will not play cricket, you will study, Yes, but sir, that's, how yeah, that's, specifically, how, like what do you do? जैसे बहुत सारे बच्चे they will rewatch the recording, they will read the notes, है ना? क्या करते हैं आप specifically? well, I think I do that too. Sometimes I rewatch the recordings if I don't understand anything. I usually write down notes a lot because when I write, I remember better. And then this is something I didn't do before, but
this time I'm trying to solve more questions because I realized that even if I know the answer, I don't understand the questions sometimes. See, the only preparation, see, this for everyone. If you are preparing for exam में क्या आता है? सवाल आते हैं, तो आप सवाल देखिए, आंसर, सवाल और आंसर. आप चाहे तो गाइड बुक लेके ना, दिस इज रियली सेइंग, गाइड बुक लेके आप क्वेश्चन आंसर को कॉपी पेस्ट भी कर लेना. दैट इज बेटर प्रिपरेशन देन रीडिंग द नोट्स, वॉचिंग द लेक्चर और डूइंग एनीथिंग एल्स. ओके, एग्जाम में जो आता है आदमी को उसी चीज की प्रिपरेशन करनी चाहिए. एग्जाम में आपको ये नहीं पूछ, अब आपसे कंसेप्ट तो पूछा ही नहीं जाता एग्जाम में, आपको आंसर राइटिंग आना चाहिए. ठीक है, सो मे बी बिकॉज वी हैव टू कवर द कंटेंट ना, और कंटेंट को बिना एक्सप्लेन के नहीं कवर किया जा सकता. सो द पैटर्न इज दैट कि आई हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. अब ये चीज जो है ना, अबाउट लाइट हिट्स द ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या हो रहा है, देन थ्री केसेस, ये कभी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, सिलेबस में भी नहीं. बट दिस विल क्लैरिफाई अ फ्यू थिंग्स, कंसेप्चुअली आपका वहां पे अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा. दैट्स इट. बट इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू डायरेक्टली इन एग्जाम. डायरेक्टली क्या हेल्प करने वाला, जो अभी तक सवाल हम लोग देखने वाले, दिस थिंग. अब देखिए, ये चीज आपके नोट्स में है, बट अगर हम अगला सवाल देखें ना, सी हियर थिंग्स, आई होप यू गाइस हैव रिटन. हाथ आप लोग का नहीं रेज हुआ है, बट आई होप यू हैव रिटन दिस. सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज कंपेयर द wavelength. I hope you guys remember GPH. Wavelength is given by lambda. Huh? Wavelength. Compare the wavelength of light absorbed by the following. है ना? अब यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है NiNO2 whole 6, and here you are having 4 negative, NiNS3 whole 6, and here you are having 2 positive, not 2 positive. Then you have nickel H2O whole 6, this is also 2 positive. ठीक है. Now here what you need to see, first of all आप एक चीज ये कर लीजिए, that all of these are octahedral, Ml6 वाला केस है, and also look at the oxidation number. So nickel X plus 6 into minus 1, it is equal to minus 4. X will be equal to 6 minus 4, it will be equal to plus 2. Here nickels and NH3 is 0, so all the charge in this complex is because of nickel, so 2 positive. Here also water is 0, so all the charge in this complex is because of nickel, that is plus 2. ठीक है. अब all of these nickels are in plus 2 oxidation state, so obviously यहाँ पे difference oxidation state की वजह से नहीं होगा, so you will have to look at the ligand. You'll have to look at the ligand. So in ligand what we can compare, we can compare the delo. Delo कहाँ से मिलेगा आपको, you will get it from spectrochemical series, and from spectrochemical series we know that NO2 negative is higher, उसके बाद NH3 का भी आता है, and then we have the water, and then they are asking you to compare the wavelength. तो वेवलेंथ और डेलो में क्या होता है रिलेशनशिप, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एज यू कैन सी. डेलो जब ज्यादा है तो लैम्डा कम है, राइट. डेलो जब कम है तो लैम्डा ज्यादा है. सो इन दिस केस व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू, अच्छा अगर हम इसको ए बी और सी कर दें, दिस इज आल्सो ए इज ग्रेटर बी में उसके बाद और सी में लास्ट. सो हियर यू राइट सेम थिंग ए बी सी, बस आप साइन चेंज कर दीजिएगा. दिस इज द ऑर्डर फॉर वेव, राइट. अगर आपने ये कंसेप्चुअली कितना भी पढ़ लिया हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कलर इन कॉम्प्लेक्सेस, बट इफ यू डू नॉट डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, एग्जाम में ये होगा ही. एग्जाम में आप पता नहीं क्या पूछ लिया, हम पढ़ के क्या कहते हैं. ठीक है. सो इट इज नेसेसरी टू डू द क्वेश्चंस. ठीक है, प्लीज राइट दिस डाउन, लेट मी नो वंस यू आर डन.
Waiting for Aliza, Deborah, Pia, and Fadil. Waiting for Fia and Fadil. Waiting for Fia. आप लोगों को समझ में आया ना ये सॉल्व प्लीज टेल मी गाइस, रचिता, अलीजा, फादिल, डेबोरा एंड फिया. Yes, sir. Yes, sir. That's it. ठीक है. Now, right next. अब these are some ना miscellaneous type of topics जिससे सवाल लेकिन आते हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पे देखिए एक और चीज रचिता आपने पूछा था, लाइक एनीथिंग स्पेसिफिक दैट इज इंपॉर्टेंट. तो हमने कंसिस्टेंटली आपको बता दिया कि आईयूपैक नेमिंग आता ही है, बाकी कोई चीज आए नहीं है, बाकी चीजें भी आती हैं. फॉर एग्जाम्पल हाइब्रिडाइजेशन के वाले सवाल आते ही आते हैं, ठीक है. बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है आपका बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट्स. बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट्स. नो, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, थ्योरेटिकल है, छोटा सा आसान टॉपिक है. प्लीज राइट द मेटल कार्बोनिल बॉन्ड has both sigma and pi character. Both sigma and pi character. Right, next point. The metal carbonyl sigma bond is formed by the donation of electron from lone pair of carbon in carbonyl donation of from to the empty d orbitals of central metal atom. ठीक है. सो मेटल के पास होगा the d orbital like this. Okay, now this is generally the dz. तो यहाँ पे एक चीज नहीं दिखाया जाता, that is the ring. इस तरह से रिंग होगा, but we don't show that ring, है ना. So you have just seeing the lobes on the z axis, and carbonyl is carbon triply bonded with oxygen with a lone pair. ठीक है, with a lone pair. So this lone pair is also in a lobe. It will be in an orbital. So what happens here? Carbon gives electron to the empty d orbitals. ठीक है, empty d orbital में ये इलेक्ट्रॉन को देता है. Now here you can see there is a head-on overlap, and this leads to the formation of sigma bond between metal and carbon. तो metal
और कार्बोनिल के बीच में देयर इज अ सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप. तो दिस इज सिग्मा ओवरलैप. हेड ऑन जो ओवरलैप होता है सिग्मा ओवरलैप. नाउ राइट नेक्स्ट. The metal CO pi bond is formed by the pi overlap between filled d orbitals, d orbital of metal, or rather CMA, central metal atom, and anti-bonding pi star orbital of C. We have metal. तो ये मेटल के d orbitals हैं which are filled. These are filled metal d orbitals, and then we have the carbonyl. कार्बोनिल में आपके पास यू कैन सी दैट देयर आर पाई बॉन्ड्स. तो पाई जैसे पाई बॉन्ड होगा तो पाई स्टार उसका क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा. राइट. सो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज समथिंग लाइक दिस. एंटी बॉन्डिंग याद है आप लोगों को क्लास 11th से? अब यहाँ पे फिल्ड मेटल डी ऑर्बिटल आर गिविंग इलेक्ट्रॉन टू व्हाट? द कार्बोनिल. So you will have a pi overlap which looks like this. Pi overlap जो होता है ना, that is above and below the internuclear axis. So न्यूक्लियर के ऊपर और नीचे इस तरह से pi. So this is pi overlap. Now, अब यहाँ पे देखिए आप दो चीज हो रही है. Carbonyl is for sigma bonding. What is happening? Electron is given by carbonyl to the metal. For pi bonding, what is happening? Metal is giving electron to the carbonyl, right? So both of them, carbonyl भी electron दे रहा है, metal भी electron दे रहा है. So both of them are working towards one particular goal, and that goal is bonding between metal and carbon. And that is why when few things they work together in one particular goal ना, तो उसको बोलते हैं synergy हो चुका है ना. अगर if man is in synergy with the nature, then everything is very good है ना environmentally. तो वैसे यहाँ पे metal भी bond बनाना चाह रहा है, carbonyl भी bond बनाना चाह रहा है. That is why we get a synergic effect, और इसी चीज को बोलते हैं synergic bond, and it leads to synergic effect जिसकी वजह से stability आती है. ठीक है. You will write next point. लिखिए, आपको समझ में आता जाएगा, लिखते जाइए. The metal to ligand bonding in metal carbonyls creates a synergic effect which strengthens the bond between metal and carbonyl. This type of bonding is called synergic bond. Ligands which accept electron from
metals are called pi acceptor ligands. Raise your hand if you're done, guys. Waiting for Alisa, Deborah and Fadil. फादिल, आपका इंटरनेट अभी भी ठीक नहीं हुआ है? यस फादिल. Sorry, sir. Is your internet good now? Yes, sir. Yes, sir. After this, write limitations of crystal field theory. ठीक है. Now there are a few limitations. Number one is that it only accounts for the ionic character of metal ligand bonding. ठीक है. It only counts for the metal ligand bonding ionic character. If you remember the first class of CFT, in that we saw that it assumes that there is electrostatic force of attraction between metal and ligand, है ना. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि क्या हो गया, आयनिक बॉन्ड. ठीक है. राइट. नेक्स्ट, इट does not take into account the partial covalent character of metal ligand bond. ठीक है. अब ध्यान दीजिए जरा. When we talk about crystal field theory, so according to crystal field theory, the bonding is ionic. और अगर आयोनिक बॉन्ड हुआ है मेटल और लिगेंड के बीच में, तो सबसे द बेस्ट बॉन्डिंग, द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड शुड बी बिटवीन अ नेगेटिव लिगेंड, an ionic ligand. Correct, guys? Yes or no, please tell me. If we have an ionic ligand, that should have the best bonding, the most strong bonding, because crystal field theory, it assumes that metal and ligand, they have what? They have ionic character. The metal ligand bond, it has ionic character. तो सबसे अच्छा बॉन्ड किसको बनाना चाहिए था? आयनिक लिगेंड को. मेक सेंस? Yes or no, please tell me, guys. Yes, sir.
but we see that the strongest bond is made by what? Carbonyl, which is neutral. And also, if you look at the weak field ligand, all of the weak field ligands are what? They are negatively charged, anionic. And so this is a limitation of crystal field theory, which is further explained by ligand field theory and molecular orbital theory. That is not in the scope of our discussion. Okay, so last जो आपके पास limitation है, it is according to CFT, purely ionic ligands should have strong field and make stronger bond with metal. But that is not the case. Most anionic ligands are weak field ligands and strongest bond is made by carbonyl, which is neutral. Raise your hand if you're done writing, guys. Raise your hand if you're done. Waiting for Alisa, Deborah, Fia, Fadil. Waiting for Alisa and Fia. चलिए ठीक है, so that's it for today and just give me a second. आप लोगों का बस एक टॉपिक बचा है, दैट इज आइसोमेरिज्म. ओके, आइसोमेरिज्म के अलावा सब कुछ हो चुका है.
Let me see if we have any assessment today. Can you guys see if there is any assessment activated? अभी तो नहीं हुआ होगा. Ask the team also. It's not there. Just give me a second.